Assalamu alaikum, my dear students, ladies and gentlemen. This is our session number 7, and we have reached at a point where we would like to see that how far we have traveled. And speaking of the travel in management, हमें ये भी देखना है कि Pakistan is a part of the globe. So how are we traveling as compared to the developing world? इसलिए कि एग्रीकल्चरल एज टू इंडस्ट्रियल एज टू नॉलेज एज, और अभी हमने विजडम एज की तो बात ही नहीं की, लेकिन इस ट्रैवल के अंदर भी मैनेजमेंट स्टाइल भी कुछ चेंज हुए या नहीं, वर्किंग स्टाइल भी कुछ चेंज हुआ या नहीं. एंड इन अदर वर्ड्स, इफ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर we have started using a better quality seed. Now remember, when we speak of better quality, we are saying a seed which has been innovative, a crop of a better yield, productivity would go up. A farmer who knows what would be the crop at the end of the season, when it will be the harvest time, how in these months things will be developed, how the farmer is educated. So in other words, what we are not saying that let everybody go from the agriculture sector to the industrial sector. No, it's a mindset. And we are not saying that every industrial worker or every industry has to be, closed down to become a knowledge worker or a knowledge-based organization. That is a mindset. Mindset is that how much do you learn to do what you're doing, to do it better? How much have you learned from the past mistakes? For example, in the agriculture sector, what pesticides were used last year, last 5 years? What were the results? Is the data being collected? What was the effect on the harvest, on the crop? And then, during the season, what were the fluctuations in the market? Is the farmer becoming intelligent, knowing which market is going to give a better price for the harvest? Is it the time that I should immediately send my crop to the market, or should I wait? And if I have to wait, where are the warehouses and cold houses, cold storage, where I can put my crop in? That is what, my dear students, we are asking: the role of knowledge, the role of information to be used as an advantage in the knowledge-based economy. And I have seen many countries around the world where farmers are hooked up to the websites. What are the prices of the crops, different harvests, different fruits and vegetables, and where to send my crop? And then, what kind of agriculture marketing strategies should be used? What kind of selling strategy, packaging strategies? Because if the crop gets waste, time has gotten waste, energy has gotten waste. So someone has to learn new way of doing things. When this information age is present and we say that we are well connected, mobile phone are available everywhere. So the question is, if the mobile phone is available in the village, is the villager, is the farmer in the village, does he or she know what new seed, what new fertilizer, what new way of putting the things together, what new way of transporting the harvest, what new way of marketing my crop is being used by different people, and how to get a better price for my product. That is what we are saying, the role of knowledge
in whatever process we're doing. Same is the case in the industrial age. Industrial age does not mean that we should stop and close the factories. No. It is the mindset, how you deal with your workers, how a teacher deals with the students. Remember मैंने कहा था ना कि telling and directing style. Students would just simply listen and not argue and not question, or the student is not encouraged by the teacher that he or she can ask questions. Only one-way communication. That is industrial mindset. कि जी टीचर ही को सब पता है, स्टूडेंट को तो कुछ भी पता नहीं. इंडस्ट्रियल माइंडसेट. इस माइंडसेट को हमें चेंज करना है. ऑर्गेनाइजेशंस में भी, ऑफिसेज में भी, एंड बाय द वे लेट मी से इवन एट होम. Remember, even at home, when we say that the father knows the best and the son and daughter, abhi to ye bacche hain. I'm sorry, that's an industrial mindset. All of you at home, you have learned enough, you have grown enough. A teenager or the one in 20s, remember we said network customer, network age customer, network age knowledge worker. The one who is born after 1970. उन्हीं के बारे में हमने कहा था ना. They think and they earn their living by thinking. They would like to acquire new knowledge, they would like to acquire new technology. तो मेरी गुजारिश उन सीनियर मैनेजर्स से, उन बॉसेस से, उन सीनियर टीचर्स से ये है कि इंडस्ट्रियल माइंडसेट फिर ये होगा कि आप उन यंग मेल एंड फीमेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, सबऑर्डिनेट्स, उनको एनकरेज ना करें. हमने कहा था ना, उनको क्रिटिकली सोचने का मौका न दें, उनको आर्गू करने का मौका न दें. And please keep in mind that now even the teenagers and the one in 20s, they also know what is the worth of their respect. They have self-respect. So the senior teachers, the senior managers, the bosses must learn how to give the self-respect to the knowledge worker. Remember, knowledge worker is simply the one who is well educated, who can use this information for his work, who is connected with the technology. Technology is part. Information and communication technology. Even when you're using this SMS, the data goes around and quickly the data goes at such a faster speed to somewhere, maybe to your customer, maybe to your boss, maybe to your manager, maybe to the market, that it brings advantage to you at the individual level. So how you use the technology for farming, how you use the technology for industry, how you use the technology for marketing, how you use the technology for negotiation, how you use the technology for selling, technology is part of the game. And speaking of technology, my dear students, industrial mindset पर ये होगा कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मशीनरी को चेंज ही नहीं करना चाहते. Remember we talked about productivity? Productivity must increase 50 times or 100 times. How can it be increased? In Pakistan, I have seen companies that they would like to update their technology. And technology, hardware, as you update, it becomes cheaper. Well, the question is, then would you like to carry along with the old technology and you expect a better productivity from the worker? No, it will not happen. We have to develop this mindset that if we are living in the information and knowledge age, and we defined knowledge at least, अभी तक जो हमने डिफाइन किया था, ये कैपेसिटी है. हमने कहा था ह्यूमन कैपेसिटी. चलिए हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी. ये उसका पोटेंशियल है, ये उसकी एबिलिटी है कि वो मार्केट से कैसे लर्न करती है,
वो कस्टमर से कैसे लर्न करती है, वो सप्लायर से कैसे लर्न करती है, वो वेंडर से कैसे लर्न करती है, वो कैसे उनसे कम्युनिकेट करती है. बिकॉज वंस यू आर कम्युनिकेटिंग, वंस यू आर नेटवर्क with your customers, you have developed a supply chain. You are creating a better value. So in other words, your workers, your customers, your investors, all of them working together for a better advantage. इसका मतलब फिर ये होगा, my dear students, कि competency market किसकी? नॉलेज वर्कर्स की. कमर्शियल मार्केट जहां आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का. और तीसरी कौन सी? इन्वेस्टर मार्केट, जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है. इन तीनों को फिर अलाइन होना होगा. द ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्रेन द वर्क फोर्स टू रेज देयर कॉम्पिटेंसी लेवल. जब आप कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, देन व्हाट इज दिस? दिस इज नॉलेज, दिस इज स्किल सेट. कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को यह कल्चर डेवलप करना होगा. एचआर मैनेजर को यह ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का शेड्यूल बनाना होगा कि ये एम्प्लॉइज, ये वर्कर्स हमारे एसेट हैं. सिर्फ रिमेंबर आई सेड, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में मशीन तो आपका एसेट है, वो कंप्यूटर आपका एसेट है, और एम्प्लॉई को और वर्कर को आप कॉस्ट के तौर पर शो करते हैं. वेल, वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट, बिकॉज इफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द कंपनी हैज टू ग्रो, इट हैज टू ग्रो ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल कैपिटल, इंडिविजुअल नॉलेज कैपिटल. सो यू हैव टू रेज द कॉम्पिटेंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉई. So the individual capital, individual knowledge capital should increase. So it will enhance the intellectual capital of the company. अब intellectual capital का क्या components हैं उसके? We will talk about that. But at least we know that the individual knowledge capital is basically his experience, his expertise, his decision-making style, his creative thinking style, his attitude towards the customer, towards the process, towards the operation, towards the company. And if he or she is willing to give his heart, his head, and his hands, the company will survive and the company will sustain. So my dear students, then we would like to see that how things are changing, and in this changed environment, what are the new assets for the organization? The new assets for the organizations, please take a look, and especially strategic corporate assets. If you still think कि कंपनी की लैंड, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वही हमारा एसेट है और आपकी सारी स्ट्रेटजीज उसी की बुनियाद पर बन रही हैं, आई एम सॉरी, दिस इज प्री इंडस्ट्रियल माइंडसेट. आपको मिलेगी ऐसी कंपनियां. इंडस्ट्रियल माइंडसेट कि जी हमारे पास तो देखिए अभी भी टेक्सटाइल सेक्टर में खास तौर पर आपको नजर आएगा कि जी हमारा तो लेबर का जो बहुत बड़ा पूल है, हमें एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल भी है, और वीविंग की टीम भी है, और डाइंग की टीम भी है, और स्पिनिंग की टीम भी है. वी विल नेवर बी आउट ऑफ जॉब एंड आउट ऑफ मार्केट. वेल, टेक ए लुक ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात कर रहे थे. सी हाउ द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग is switching from Pakistan to Bangladesh to Malaysia to China. So if those of you who like to work in the garment sector or in the textile sector, please think of these scenarios which are emerging. Make yourself aware. Make yourself knowledgeable that what are the new quality issues, what are the new social responsibility issues, what are the new labor issues, and what are the new scenarios which are developing that the markets are becoming information and knowledge intensive. And do you get the information right on time and you act accordingly? If not, I'm sorry, then it might happen that some company in Sialkot
in sporting goods. One very fine morning, they will get up and come into the company and they will come to know that the customer has walked away. Why? Because you did not upgrade your technology. You did not upgrade the knowledge level and the learning level of your workforce. अभी भी वो पुराना आप स्टिचिंग स्टाइल यूज कर रहे थे, अभी भी वही टेक्नोलॉजी पुरानी थी. देखिए, एक चॉइस तो फिर ये हो सकता है कि जी ठीक है, when we will not get orders from the market, we will close the factory. ये भी एक माइंडसेट होता है. वर्कर्स को ले ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे इन्हें. जो वर्कर कहना नहीं मानता उसको फायर कर दो, हायरिंग एंड फायरिंग, और हायर कर लें. माफ कीजिएगा, ये भी इंडस्ट्रियल माइंडसेट है. मैनेजर विल टेल, एंड वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू द सबॉर्डिनेट्स और टू द वर्कर्स और टू द पर्सन हु इज ओनिंग द प्रोसेस. देखिए, सेल्स फोर्स है ना, तो अब आप कहते हैं कि जी सेल्स फोर्स की जो फीडबैक है, व्हाई शुड वी टेक दैट फीडबैक, और मार्केटिंग मैनेजर कहता है कि उस फीडबैक पर मैं क्यों एक्ट करूं. ये तो यंग एमबीएज हैं, इन्हें क्या पता है मार्केट कैसे ड्राइव की जाती है. मुझे बड़ा अरसा हो गया है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हुए और मार्केटिंग प्लान बनाते हुए. इसी तरह से सीईओ जो है वो समझता है कि पैसा तो मैंने इन्वेस्ट किया है, आई विल सिंपली टेल देम व्हाट प्रोडक्ट टू बी मेड एंड आई विल डायरेक्ट देम हाउ द थिंग्स विल मूव. और जब मेरी मर्जी होगी तो मैं टेक्नोलॉजी और मशीन को चेंज कर दूंगा. वेल, in this global world, one very fine morning, then you will see that maybe a better quality product would come from a neighbor. इस सिनेरियो के अंदर जब हम नॉलेज इकोनॉमी की बात करते हैं, तो then you have to give importance to the human capital. And when we speak of the human capital, basically we are talking about the learning and the knowledge of the person, of the workforce, so that the work should be knowledge based, work should be innovation based, work should be information based, and decision making should also be on the basis of the facts. My dear students, in other words, money, yes, it's important. Financial capital, yes, it's important, and money is required, and yes, it does talk, but money cannot think. Machines, yes, they do perform, they make you productive, many times better than human beings. But can machines innovate? Can machines invent a new product? You can have all your knowledge of customer, knowledge of documentation, information of processes, all stored up in the database, or maybe in FAQs, answers to the FAQs. And you think you don't need the workforce now. Well, that may not be true. Because the machine, yes, it can perform better and give you productivity, but it cannot innovate. So for innovation, for invention, for creativity, for thinking, you have to invest in the human beings. Let's once again listen to the Peter Drucker and see what he said in 1960, that to make knowledge work productive will be the great management task of 21st century. इसीलिए मैनेजमेंट के जो स्टाइल्स हैं वो हमें एक कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के तौर पर पता तो होने चाहिए कि फिर किस किस्म का मैनेजमेंट स्टाइल आपको नॉलेज वर्क के लिए और नॉलेज वर्कर के लिए और नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट्स और कस्टमर्स को डील करते हुए, उन मार्केट्स को डील करते हुए, what will be the characteristics you will be looking for and we will be looking for, and you should be ready for it. Just as to make manual work more productive was the great management task of the 20th century. And speaking of knowledge then, let us look some of its characteristics. कि आखिर अगर हमने इस रिसोर्स को मैनेज करना है, इसलिए हम नॉलेज मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, कि फिर ये रिसोर्स कैसे मुख्तलिफ है उन रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन से. जैसे फर्ज कीजिए हमने मनी, मशीन, मटीरियल, टेक्नोलॉजी, लेबरर, फाइन. Even let's include human resources. If you think of
human as a resource, because knowledge is in the human's head or human's heart. And think of this knowledge, what are its characteristics if you take it as a resource? Number one, this resource is very strange. It is different than other resources. This resource is expandable. Unlike other resources, this resource, more you use, more it is generated. Remember we said, you share one idea, everybody gets two. You share two ideas, and the other one gives you one more, you get three. So this resource, when it is shared and used, it generates more. When you put new innovation into the product, it goes in the hands of the customer. Customer use it. You go back to the customer, take a feedback. You generate new information. That is the characteristic of this resource. It is expandable. Number two, it is compressible. क्या मतलब? This resource can be packaged into small physical format. Think about it. Rather than sending a book through the courier service, you convert the book into bits and bytes. All right? Would you like to send, compress kar diya na? Would you like to send the CD now? Or would you like to package the bits and bytes and attach it as a attachment with your email? Packaged. Now think of it. The whole library is available to you, Congress library, the whole publisher's library, the whole library is available to you in the packaged form. You're sitting at home, you're accessing to the source of knowledge. Can you do this with any other resource? आपने 1 टन वीट को ट्रांसपोर्ट करना है. आप उसे पैकेज करेंगे, फिर उसको शिप करेंगे, फिर उसको आप सप्लाई करेंगे किसी दूसरी जगह के ऊपर. आपने कोई भी मशीनरी आपने भेजनी है, you can't package it and make it smaller. Think of any resource of production. Can you package and make it compressed? Probably not. It is only the knowledge resource, knowledge in the form of books, knowledge in the form of papers, knowledge in the form of patents, knowledge in the form of brands. You put it together in the form of bits and bytes, here it goes. So my dear students, wo jo industrial mindset tha, कि we're dealing with things, that is being changed now. इसलिए कि things were made up of atoms and molecules. मशीन स्टील की बनी हुई है. वीट कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है. मीट प्रोटीन की बनी हुई है. प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल का बना हुआ है. ये लैपटॉप प्लास्टिक भी है, ट्रांजिस्टर्स भी हैं, कॉपर भी है. But this is all made up of atoms and molecules. But when you speak of knowledge, and we are asking that you can compress it, make it a soft copy. So in other words, this resource of production is now made up of bits and bytes. Think of your audio and video. You simply attach it and let it go at the speed of light. It is diffusible. आप कितना ही इसको संभाल के रखें, knowledge leak होता है. Better technology, it is very difficult to stop. लोग कॉपी करते हैं. अच्छा, जब कॉपी करने की बात हो रही है, हम लोग तो रिवर्स इंजीनियरिंग के वैसे ही माहिर हैं पाकिस्तान के अंदर. You bring any product, give it to the people in, auto market or to the workshop or to the foundry. They will give you very original looking product, diffusible. तो इस
रिसोर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है और इसको समझ के चलें. आई थिंक सोनी इज डूइंग इट, मेनी अदर कंपनीज आर डूइंग इट, दैट दे कम अप विद अ न्यू डिजाइन, दे नो दिस डिजाइन विल बी कॉपीड, they come up with a better design. So they keep on innovating. Look at all these mobile phones. They know once a utility is placed in it, it will be copied. So how are you going to get advantage then? Well, in the new design, after maybe 6 months or 4 months or 3 months, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो भी अब कम हो रहा है. प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल तभी कम होगा ना कि आपके पास एक ऐसी वर्क फोर्स हो कि जो उस डिजाइन के अंदर इनोवेशन लाए, चेंज कर दे, इंक्रीमेंटल चेंज, एंड यू ब्रिंग इट एंड फेस द मार्केट विद ए न्यू प्रोडक्ट. सो इस रिसोर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डिफ्यूजिबल है. देखिए, बाकी किसी रिसोर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. मशीन आपकी है तो आपके पास है, कोई आपसे ले जा नहीं सकता. प्लास्टिक आपके पास है तो कोई ले जा नहीं सकता. आप किसी ऑयल, डीजल, पेट्रोल, थिंक ऑफ एनी टेंजिबल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन. बल्कि मुझे कहने का दीजिए, अगर आप ह्यूमन को एज ए रिसोर्स समझते हैं तो जो वर्कर आपके पास है, वो वर्कर अगर कोई दूसरा ले भी जाए, अगर वो वर्कर आपके साथ लॉयल है तो वो अपने नॉलेज को शेयर नहीं करेगा, डिफ्यूज नहीं होगा. वर्कर आपके पास रहेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये नॉलेज लीक होता है. तो इफ द रिसोर्स इज डिफ्यूजिबल, then how are you going to get the advantage in the market on the basis of the knowledge? You need to learn that. It is shareable. If it is given to others, if I share the knowledge with others, I still do not lose the ownership. मैंने आपसे शेयर किया था ना कि I give a note of 1,000 rupees to someone, I lose the ownership. If I give this coat, which is in my ownership, if I give this coat to someone, I will not have it. It is only this resource that even if I share, even if I teach this skill to someone else, skill of selling, skill of negotiation, skill of decision making, skill of how to use this knowledge as a source of competitive advantage, I still do not lose the ownership. One more characteristic of this unique resource of production in the knowledge-based economy, it is transportable. क्या मतलब? It can move from place to place quickly and easily and ready for collecting on receipt. Here you attach with the email, click of a button, and the other person sitting in United States thousands of miles away immediately gives you the answer, yes, I have received it. आप मुझे बताइए इसके मुकाबले में कोई और रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन कि जो इतनी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो सकता हो. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी मैंने आपके साथ नॉलेज एज ए रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन उसकी शेयर. अब ऐसा रिसोर्स है, इसको आपने मैनेज करना है. रिमेंबर, वी मैनेज्ड लैंड, वी मैनेज्ड फैक्ट्रीज, वी मैनेज्ड मार्केट्स. दैट्स व्हाई वी सेड वी यूज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट स्टाइल. Okay, so if the resource of production in the knowledge-based economy is my knowledge, and these are its characteristics, और कुछ और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा as we go on, then how are we going to get a competitive advantage when the resource of production have these kind of characteristics? So then we need to learn and use this knowledge management as a tool to deploy it in the market, that we still can be having an advantage, a competitive advantage or a comparative advantage. That our performance in the market should be better than the competitor. So in other words, we want to use knowledge management to enhance the organizational performance. But speaking of the organizational performance, we are not only speaking of the financial performance. We need to learn what are the other areas. जैसे आपने क्वालिटी मैनेजमेंट में लर्न किया होगा कि we need to improve the process performance.
Here we need to have an holistic approach. हमें लर्निंग के प्रोसेस को भी एनहांस करना है, इसलिए कि वो प्रोडक्शन प्रोसेस को एनहांस करेगा. प्रोडक्शन प्रोसेस एनहांस होगा, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, तो कस्टमर्स वुड बी मोर हैप्पी. और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे. वी विल बी परफॉर्मिंग बेटर व्हेन द कस्टमर्स विल बी यूजिंग आवर सर्विसेज. और आप मुझे बताइए कि व्हेन कस्टमर्स will be more happy and performing better by using our products and services, don't you think we will get a better return on the investment? Our financial performance, our revenue data, our profitability would also be enhanced. So in other words, we want to use knowledge management as a tool to increase the performance of the organization, not in one dimension, but more than one dimension. Financial performance, customer performance, process performance, learning performance, social performance, market performance. So in other words then, the third millennium institution, 21st century organization should try to preserve the natural capital. जो natural capital है, उसको भी हम preserve करेंगे. इसलिए कि वो तो वैसे ही आपकी अकाउंटिंग शीट पर एज ए एसेट आप उसको लेकर आते हैं, कन्वेंशनल आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंट्स के. ऑफ कोर्स वी विल अट्रैक्ट फाइनेंशियल कैपिटल इफ द ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड मिलेनियम इंस्टीट्यूशन, इफ इट इज सस्टेनेबल, इट विल अट्रैक्ट फाइनेंशियल कैपिटल. गेटिंग क्रेडिट एंड गेटिंग लोन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. इफ यू हैव अ न्यू स्ट्रेटेजिक प्लान, न्यू ग्रोथ प्लान, न्यू एक्सपेंशन प्लान, and your company, your organization is doing fine with the customers, you are having a number of good management practices, certainly attracting financial capital should not be a problem. Third millennium institution will also build social capital. Communities, how they're talking about the organization. कौन सी, now think around in your town that which is the organization, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सटाइल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, घी बनाने वाली कंपनी, स्पोर्टिंग गुड्स बनाने वाली कंपनी, फर्नीचर बनाने वाली कंपनी, कौन सी ऐसी है कि जिसकी सोसाइटी के अंदर सोशल कैपिटल, सोसाइटी के अंदर गुडविल है कि जी वो हॉस्पिटल्स बनाती है, आई कैंप्स लगाती है, कुछ स्कूल्स बनाती है, कुछ नीडी और पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को हेल्प करती है. आप ये कहेंगे कि ये सारे तो वो काम हैं कि जो आपकी बैलेंस शीट पर इफेक्ट डालेंगे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी उससे कम हो जाएगी. वेल, दिस इज अगेन एन आर्गुमेंट. हियर वी आर लर्निंग दैट इफ यू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, योर रेपो, योर इमेज, your brand in the eyes of the society goes up, and in return, in the long run, you will earn more profit. Think about it, that how you will build the social capital, and building the social capital will enhance the customer capital. You will train the human capital. In other words, now training and development should not only be left to the HR manager. HR strategies should be aligned with the business strategies. If business has to grow, if the market has to grow, if you are going to expand from South Asian region to Southeast Asian region, then to grow, have you grown your human capital? Have you grown your human resource? In other words, if your commercial market is not aligned with the competency market, I'm sorry, you will not be able to deliver. And if you will not be able to deliver, how are you going to attract more profit? So it's a new mindset. Because of the
globalized and deregulated world, competition is tougher. You want to make quality product, you train your human capital. यानी अब वो वक्त नहीं है कि आप अपने वर्कफोर्स को ये कहें कि जी जाइए, पढ़ना है तो आप खुद पढ़िए, डिग्री लेनी है तो खुद लीजिए, कोर्स को करना है तो अपनी जेब से पैसे खर्च कीजिए. ऐसी कंपनी आपको मिलेंगी जो अभी भी ये कह रही होंगी. वेल, तो आप मुझे बताइए कि फिर वो लोग जो उस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हाउ लॉयल दे विल बी. Because if company is not investing anything on me, well, I'm sorry, then my loyalty to the company is that I'll give you my hands and maybe part of my head and save my skill set and sell it where I get a better market value. We are learning here how to retain the human capital. Acquiring human resource, recruitment and selection is not a problem. How to retain the employee is a bigger problem. And then, by training the human capital, how you generate the knowledge capital. Remember that experience of the workforce working on the company, if they are not committed and motivated to the company, कोई ना कोई प्रॉब्लम मशीन के साथ, प्रोसेस के साथ वो करते रहेंगे और इतना लॉस होगा कि कंपनी बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी. They will run out of business. But on the other hand, if we train the human capital in the third millennium institution, we are generating a knowledge capital first at the individual level. देखिए, सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल होगा. ये रिस्क ऑर्गेनाइजेशंस को लेना पड़ेगा कि हम जिस एम्प्लॉई को, जिस वर्कर को, जिस मैनेजर को, जिस इंजीनियर को हम ट्रेन कर रहे हैं, chances are that he or she might leave. But the question is, why would he leave? अगर आप उसका वर्क एनवायरमेंट ऐसा कंड्यूसिव, ऐसा सेफ, ऐसा मोटिवेटेड, ऐसा चैलेंजिंग क्रिएट करते हैं, why would he leave? He would not. So HR manager and the marketing manager and the production manager must learn how to retain the best cream of your workforce. कैसे आप उनके साथ डील करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे और क्या कल्चर होगा कि नॉलेज कैपिटल ग्रो होगा. इसलिए कि कल्चर भी कंपनी के इंटेलेक्चुअल कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है. And once you generate knowledge capital, certainly you will cultivate creative capital. And once again, that mobile phone company coming from a very small country in Europe, selling all over the world, and the sales are much higher as compared to those companies. Even some of them are coming from Japan. Even some of those companies, they are selling their mobile phone as compared to this little small company. Company is not small, but the country is small from where this company is coming from, because this company is more innovative. It is more user-friendly. It is of a better, innovative, knowledge-based design. Why? Because they are knowledge workers, they are so empowered, the company takes care of them to develop their human capital in such a way that they are willing to deliver all their personal knowledge for the sake of company's knowledge, to make the knowledge-based product, knowledge-full product, that when it reaches in the hands of the customer also become more knowledgeful. And as soon as the customer receives the product, customer feels happy and would be more loyal to the company. So in other words, my students, my dear students, I have this question to you then. Will human capital challenge the power of financial capital in 21st century in a knowledge-based institution? Think about it. Will human capital challenge the power of financial capital? I think the number of those workers working in the company have increased manyfold. जो अपने मैनेजर को, आप में से बहुत सारे लोग, think about it, जो अपने मैनेजर को ये कहकर खुदा हाफिज कह देते हैं कि you as a person not so good, I don't want to work with you. This company, no good, I will switch and go to some other company. I would rather work
for a company at a lower salary where I can get a better respect. Because the respect is part of human capital. I would rather work for a company where my personal human capital would grow. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर को ज्वाइन करना चाहेंगे? What is the percentage? We're not saying good or bad. All what we are learning here is what are the chances. And then speaking of the public sector, it is also becoming innovative. Privatization is coming in the public sector. Look at how many public sector companies have been privatized. All what we are learning here is that when you bring innovation, and in private sector, you have to be innovative much faster than the public sector. But public sector is also opening its eyes all over the world how to give better services. बल्कि से मुझे याद आ रहा है कि सिंगापुर में तो गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट, right from the birth to the death, they give you a roadmap. And all the offices of the Singapore government, they are ready to serve you from the day one to the day last. Take a look on their website. So innovation, and once again, innovation is knowledge based. And that brings finance. That's why I say idea brings money and money does not bring idea. So in this perspective then, what are the goals of the business, of the company you are working for? If the goal of the company is that you just simply want to grasp the business, बस जी मार्केट मिल जाए, हम अपनी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट जो है वो सेल कर दें, well then you have to make sense of the business and your objective should be that you should understand in what kind of market, in what kind of business you are. Fine, you should understand it. But if your goal is to align the business, competency market and commercial market, alignment, because you want to drive the business, then you should look into the issues of efficiency. Maybe you like to introduce the systems like quality management system. See how you can make your company and process sustainable over a long period of time. Customers should not walk away. You should make them happy and satisfied and loyal. And then you should be a profitable company. देखिए ऐसी कंपनी जो प्रॉफिटेबल ना हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिटेबल ना हो, हाउ कैन ड्राइव द बिजनेस? इट विल बी आउट ऑफ द बिजनेस. तो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, और आया दोनों आपस में अलाइन है या नहीं. इफ द गोल इज टू एनहांस द बिजनेस, वेल व्हाई डू यू वांट टू एनहांस? देखिए बॉटम लाइन इज दैट वी वांट टू ऑप्टिमाइज द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर रिलेशनशिप. नो, we want to enhance the business performance by optimizing the stakeholder relation. अच्छा, stakeholder में shareholder भी हैं, stakeholder में आपके customers भी हैं, shareholder में आपके employees भी हैं, shareholder में आपकी society भी है, community भी है. And I've seen many companies who think the whole globe as part of their community. And sustainability के perspective में, stakeholder relationship के perspective में, some companies I have seen even they take off government as their stakeholder. कि जी हमने जो चीज भी सेल करनी है उसका इनकम टैक्स, हमने उसका सेल टैक्स, उसका कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स पूरी ध्यानदारी के साथ पे करना. We take government as a stakeholder. कुछ लोग नहीं लेते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप बिजनेस परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना चाह रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स के साथ देखिए रिलेशनशिप का तो फिर फोकस ही ये है कि यू विल टॉक टू देम, यू विल कम्युनिकेट विद देम, यू विल रिलेट विद देम, यू विल गिव देम वैल्यू फॉर देयर मनी. दैट्स व्हाई ऑब्जेक्टिव विल बी टू रिटेन देम एंड टू लिवरेज देम. मैंने कहा था ना कि एक्वायर करना प्रॉब्लम नहीं है, रिक्रूट करना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उनको रिटेन करना. That is a bigger challenge. And please take a look. If the goal is that we want to keep on changing our business model as the market will change, as the environment will change. देखिए एक चीज जरूर याद रखिएगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते. पेस्ट का मॉडल आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट,
सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं होता. बट वंस दिस डायनामिज्म इज देयर, you have to change it accordingly. So if your strategic plan, if your business scenario, if your strategies of the market to deal with the market, you look at the insight and you look at the foresight and you look at the hindsight. Hindsight on the back, last quarter, last year, have we learned from our mistakes? Hindsight. So my dear students, knowledge management में हम इन तीनों साइट्स को इंक्लूड करते हैं. कौन सी? वंस अगेन, हिंडसाइट ऑन द बैक, इनसाइट मौजूदा, फोरसाइट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में. मुझे कहने दीजिए कि जब आप बैक मिरर पे देख रहे होते हैं वो आपकी हिंडसाइट है, जब आप डैशबोर्ड पे देख रहे होते हैं वो आपकी इनसाइट है. पेट्रोल कितना रह गया, ऑयल कितना है, स्पीड कितनी है, टैकोमीटर बता रहा है, और जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं वो भी कंफर्टेबल हैं कि नहीं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू लुक थ्रू द विंडशील्ड, फोरसाइट, फ्यूचर. सो आई कैन चेंज माई स्पीड, आई कैन चेंज माई डायरेक्शन, आई कैन स्लो डाउन, आई कैन लुक एट राइट एंड लेफ्ट. I can change it accordingly, because change is the sign of growth. That means, देखिए ना, insight, hindsight और foresight. Of whom? Of the managers, of the knowledge workers. That is where you bring in the new revenues, new sources, new opportunities. और देखिए, opportunities are always in future. So a company where the managers are ready to include all the data and information, data of the past, data of the present, forecast for the future. Make a plan for the future. देखिए, planning for the future is also information and knowledge. Mistakes of the past is also data and information. Your experience and expertise may be knowledge of yours, but information for me. मुझे कहने का मौका दीजिए कि जब हमारी क्रिकेट टीम का वो बेस्ट बॉलर बॉल करवाता है और वो क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतती है, लेकिन ये उसकी एक्सपर्टीज, कैन ही टीच दिस एक्सपर्टीज टू समवन एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट? दैट इज हिज पर्सनल नॉलेज. वक्त आ गया है कि अब उस पर्सनल नॉलेज की भी मार्केट के अंदर वेरी वैल्यूएबल प्राइस है. एंड वी आर टॉकिंग ऑफ द नॉलेज वर्कर्स हु कैन लिवरेज देयर नॉलेज फॉर द कंपनी and for themselves. My dear students, then coming to the end of the session, then let us come to some working definition of knowledge management. Well, KM is then an effective application of management's good practices. Good practices क्या है? जो हमने learn किया. Learn करने के बाद हमने कहा कि these are the best practice and we will use it. Practice क्या चीज होती है? The knowledge which you have learned to do the things in the best way possible. That is your good practice. मैंने बेस्ट प्रैक्टिस नहीं कहा इसलिए कि बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये होगा कि फिर उसके बाद तो फिर इनोवेशन नहीं है. ऐसा तो नहीं है ना. जो काम आज आप बेहतर कर रहे हैं, जिस मार्केट को आज आप बेहतर केटर कर रहे हैं, कल आप उससे बेहतर करने की गुंजाइश तो है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैनेजमेंट्स गुड प्रैक्टिस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी गुड प्रैक्टिसेस जो हैं along with the information and communication technology. ICT नहीं होगी तो आई एम सॉरी, नॉलेज मैनेजमेंट इफेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकेगी. टेक्नोलॉजी विल कम, बट गुड प्रैक्टिसेस पीपल बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड. सो पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी. रिमेंबर आई सेड PPT. So KM is an effective application of those good practices by using information and communication technology which will benefit the enterprise in attaining their objectives efficiently and effectively.
And naturally, when those objectives are met efficiently and effectively, the performance has to go up. Whether it is the performance of the customers, or it is the performance of the employees, or it is the performance of the market, or of the process, or of the product. And if that's the case, then at least for the first definition of knowledge management, remember we said, मैंने आपको शुरू में कहा था, knowledge management की कोई एक definition नहीं है. You have entered into an area which is more like a qualitative. You come up with your own definition, and we will share with you. Many people are saying the definition of knowledge management is. This is one, that a tool which you can effectively apply and get the objectives of the organization achieved efficiently and effectively. You can enhance the organizational performance by using knowledge management. And let me finish then by saying that knowledge management could be a tool which provides an additional advantage, a competitive advantage, a financial advantage, a customer advantage, a process advantage in a competitive world today in a globalized and dynamic environment. My dear students, then, would you not like to learn that how we can use this KM for the company you are working for, or at my personal level as well? Because first I will grow my personal capital, and then I will contribute to the organization, so organizational capital should grow. So in other words, my dear students, in other words, what I'm saying is that knowledge management helps you to grow your personal capital as well as the organizational capital. अच्छा, किताबों में ज्यादा आपको फोकस नजर आएगा कि जी नॉलेज मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है. बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है. नॉलेज मैनेजमेंट मेरा पर्सनल कैपिटल क्यों नहीं? व्हाट्स इन इट फॉर मी? I would like to grow my personal capital. So in other words, what are those best practices which I must learn, you must learn while in your program? Along with information and communication technology. वो कौन से tools हैं? ICT के. ईमेल तो आप यूज करते ही है ना, SMS भी आप भेजते हैं. इसके अलावा और कौन से tools हैं जो आप यूज कर सकें efficiently and effectively so you achieve your objective? So I think with this first definition of knowledge management and one definition of knowledge which I gave you and some of the characteristics which I shared with you, I leave it until next session. So you think about it, analyze it, and predict what it could be for you at the personal level, or you can contribute to the organization for the organization level. Thank you very much, and until next session, Khuda Hafiz.